Hello students, it's grade 5, block 3, block 6, money. Grade 5, block 6, money. When we buy things from the market, we normally get bill. A bill tells us how much money we have spent and what quantity और what things we have brought. That bill tells us. हम जब भी मार्केट जाते हैं तो हम अगर कुछ चीज़ें खरीदते हैं तो हमें उसका बिल मिलता है. तो ये बिल हमें दिखाता है कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, हमने कितना सामान लाया है. सो दिस बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो आज हम यही जानेंगे. टुडे वी विल लर्न हाउ टू प्रिपेयर अ बिल फॉर एनीथिंग. सो page number 30, your maths textbook. This question is given. Raj bought the following items from the market. 1 jam bottle for rupees 90, 3 honey bottles for rupees 25 each, 2 cold drinks for 40 each, and 1 ghee packet for 225. So make a bill to find the total bill amount. So अभी हम इसका बिल तैयार करने को कहा है कि राज ने ये चीज़ें मार्केट से लाई है, तो प्रिपेयर अ बिल फॉर इट. और सेकंड क्वेश्चन है कि इफ राज पेड द बिल विथ अ 500 नोट, हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक. तो हम पहले बिल तैयार कर लेंगे और फिर देखेंगे कि कितने अमाउंट उसने स्पेंड की है, कितने रुपीस उसने खर्च किए हैं, और फिर हम जब उसका टोटल अमाउंट आ जाएगा तो उसे सब्सट्रैक्ट करेंगे 500 रुपीज नोट से जो कि राज ने पे की है. तो फर्स्ट वी प्रिपेयर द बिल. ओके, स्टार्ट. वी प्रिपेयरिंग द बिल. हियर on the left side you write the name of the store, Ravi store. That is, I have written Ravi store. Then date, any date you can write. What is the date today? 15/8/2020. And then we are preparing the bill. Here in the bill, serial number is given. Serial number. After that, column, particulars are there. Particulars means what he has bought. Then rate is there. Rate, amount, and then quantity. And then amount. Quantity and then amount. So here the serial number is 1. First he bought 1 jam bottle. So here I will write, but in the particulars, jam bottle. What is the rate of that jam bottle? For rupees 90. And then quantity 1. And amount, for total amount for one quantity 90 rupees he has to pay. Then second item, he has bought that 3 honey bottles. Rate 25 each and quantity 3, and 25 3s are 75.
So he has to pay 75 rupees for 300 bottles. Then third item, he got cold drinks for 2 cold drinks. So in particulars we will write cold drink rate 40 rupees each, and he has bought the quantity 2. Then 42 is 80. Then fourth thing, he has bought that ghee packet, 1 ghee packet. Ghee packet. And what is the rate of that? For rupees 225. Only one quantity is, so he has to pay 225. So you will make the total of this. What is the total rupees of this? We will write here total. See, 5 and 5, 10. Carry 1, 2 and 1, 3. 3, 3 and 7, 10. 10 and 8, 18. 18 plus 9. 18 plus 9. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 and carry 2, 2 and 2, 4. Here is no hundreds number, so we give 0 here. And quantity 3 and 1, 4, 4 and 2, 6 and 1, 7. 7 items. Total for 7 items. He has to pay 470 rupees. 470 rupees he has to pay. We add this amount and he has given 500 rupees to the shopkeeper. Then how much amount? The second question is how much amount he will get back. So subtract or minus 470 from 500. 0 from 10. Here 0 from 0, 7 is not going to, so we take from here 1. We will borrow from here. Here will 4 and here will become 10. From 10 minus 7, 3 and 4 from 4, 0. So 30 rupees he will get back. He will get back 30 rupees. So like this you have to solve the 2 questions on page number 30. Solve the next part of this lesson on page number 33 of your maths textbook. The question is given here. I am reading the question. Rajan took a loan of rupees 90,000 to buy a shop. He paid back a total of rupees 1,05,000 in 1 year. So given information is this, and you have to solve these 2 questions. Find the interest paid by him on the loan amount and how much did he pay back every month. तो राजन ने 90,000 रुपीस का लोन लिया था और उसके लिए बैक पेड करना पड़ा है 1,05,000. तो आपको ढूंढना है कि उसने कितना इंटरेस्ट पे किया. इंटरेस्ट द एडिशनल मनी जो हमें पे करने पड़ते हैं, द एक्स्ट्रा मनी फॉर हैविंग यूज द मनी. जो पैसे हम यूज करते हैं वो पैसे के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, उसे इंटरेस्ट कहते हैं. सो द टोटल मनी टू बी रिटर्न बैक इज कॉल्ड द अमाउंट. सो वी लेट्स स्टार्ट एंड let's learn how to solve this question. Raj took a loan of 90,000.
उसने 90,000 का लोन लिया था और उसने 1,05,000 पेड बैक किए हैं। मतलब ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसने दी हुई, ये लोन के साथ, इंटरेस्ट के साथ दी है। तो हमें यहाँ लिखना है लोन टेकन एंड दिस अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो इससे हमें इंटरेस्ट ढूंढना है। तो हम इस अमाउंट से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो हमें उसका इंटरेस्ट पता चलेगा। Then this 15,000 rupees interest he has to pay. Then how much did he pay back every month? हर महीने कितने देने पड़ते थे? तो इसके लिए हमें कितने महीने रहते हैं या मंथ रहते हैं साल में? 12 मंथ्स। सो 12 मंथ्स में अगर उन्होंने इतनी अमाउंट दी है तो एवरी मंथ कितने अमाउंट दी होगी, इसके लिए हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। इस अमाउंट को 1,05,000 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, तो हमें पता चलेगा कि एक महीने में उन्होंने कितनी अमाउंट पे की है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 12 से इसे, सो वी कैन गेट द आंसर 12 8 96। We cannot subtract 6 from 5, so we are borrowing from 1. Here we'll 0, here we will get 10 and then 1 borrow from here, here you will get 15. From 15 you will subtract 6, you will get 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9. Then from 9, 0. I will take this 0 downside, it will come 90. Then 12 sevens are 84. From 0, 4 is not gone, so I will borrow from here. From 10, 4 or less 4, 6 and 8 from a 0. Again I will take this 0 downside. It will give 60. 12 5s are 60. And this 0 will go upside. So this much rupees, 8,750 rupees, Rajan had to pay every month. Rupees 8,750. So we have solved these two questions. Understand?